Hello friends, welcome back to my YouTube. So today we will discuss local base at a point. So we have taken here a theorem which is based on the property of local base, and we will discuss in this theorem each and every step of this local base theory properties. So the first statement, let's understand what says that let x comma tau be a topological space and let bx, here bx is the use for the local base. Okay, so be a local base at any point, the point is small x of capital X, this is the set. Then first is bx, that is the local base, does not equal to the phi for every small x belong to the capital X. Okay, so the second is if b belong to the bx, if b is said this is belong to the local base, then small x is also belong to the b. Okay, third is a belong to bx and any b set belong to the bx, then there exists a c, okay, a c point that belongs to the bx such that c is the subset of a intersection b. Okay, C is the subset of both intersection A and B. Okay, the fourth one is if A belong to Bx, then there exists a set B such that for this B set X belong to the B, in this set X belong, and that is subset of A such that for every point Y belong to B, then there exists a C belong to the B of Y satisfying C belong to the B. I explain you each and every step. Okay, first follow the procedure of this proof. First statement, okay, let's prove the first one. Okay, so here like the first statement is, we know that for the topological property that since x is tau open, we know that x चूँकि tau open है. Okay, so it is, if tau open means it is its neighborhood. Okay, each point of its neighborhood will open. Okay, so it is the NBD I used for neighborhood of its, it is the neighborhood of all the points of its point. Okay, so it is neighborhood of all the point, then tau set is open. So it means that we can say that since bx, that bx we are using here, that bx is the local base at any point, okay, small x that we are using of capital X that belongs to the, so it means that for bx here is a local base for any point, for at any small x point that belong to the capital X, किसी भी स्मॉल एक्स पॉइंट के लिए जो बिलोंग कर रहा है कैपिटल एक्स में, उसके लिए अगर ये इसका नेबरहुड इसके लोकल बेस को बिलोंग कर रहा है, तो हमारा कैपिटल एक्स क्या होगा, इट इज़ ऑल्सो अ नेबरहुड ऑफ स्मॉल एक्स, राइट. तो इट इज़ अ NBD ऑफ और नेबरहुड वी कैन से, so neighborhood of x, right. So it must follow that there exists a b that belong to the bx, that is local base, such that for this b that is subset of x, right. So hence we can say that bx is not equal to the input t set. Okay, for all small x belongs to capital X. Okay, I hope it is clear now. For any, let's again understand, if x is a tau open set, then it's mean that it's neighborhood of its point. So if it is neighborhood of its point, then means what we can say that it is open. So since bx is a local base, अगर bx चूँकि लोकल बेस है एट एनी पॉइंट स्मॉल x के लिए, तो हमारा कैपिटल x भी क्या होगा, नेबरहुड होगा x का, राइट. तो उसके लिए b जो हमारा लोकल बेस होगा कि एक पॉइंट होगा सच दैट वो सबसेट होगा x का, एंड हमारा बेस ये जो है वो नॉन, I mean to say that there is not empty set, right, there is just a set. So let's prove the second one, b belongs to bx, then x belongs to bx, right. This is also very easy, that you can say if b belongs to the bx means then क्या, then we can say that b is a neighborhood NBD of x, right.
इफ़ बी बिलोंग कर रहा है बी एक्स में, देन हम कह सकते हैं कि बी हमारा क्या है, नेबरहुड है एक्स का। सो बाय नेबरहुड प्रॉपर्टी से हमारा एक्स भी क्या होगा, बी में बिलोंग करेगा, राइट। यही हमें प्रूफ करना था, तो हो गया हमारा प्रूफ। थर्ड हम प्रूफ कर रहे हैं, थर्ड हमारा ए बिलोंग टू द बी एक्स, बी बिलोंग्स टू द बी, देयर एग्जिस्ट सी, राइट। सो इफ़ ए बिलोंग बी एक्स के चल रहे हैं, अगर ए बिलोंग कर रहे हैं, देन इसका मतलब है ए इज एन बी डी ऑफ एक्स, राइट। सिमिलरली अगर बी बिलोंग कर रहे हैं, सिमिलरली इफ बी बिलोंग टू बी एक्स, देन बी इज ए नेबरहुड, बी इज ए एन बी डी ऑफ एक्स, राइट। सो सिंस चूँकि अब हमारा क्या है, ये चीज़ जो ए बिलोंग कर रहा है बी एक्स में और बी बिलोंग कर रहा है, देन कहते हैं इनका इंटरसेक्शन भी होगा, राइट। देन इट फॉलो दैट ए इंटरसेक्शन बी इज ए टाउ एन बी डी ऑफ एक्स, राइट। ये एक टाउ एन बी डी होगा कि नहीं होगा। अब चूँकि बी एक्स क्या है, एक लोकल बेस है, सिंस बी एक्स हमारा क्या है, एक लोकल बेस है। सो वी कैन से दैट इफ़ बी एक्स इज़ ए लोकल बेस एट एक्स पे, सो it means that it follow there exists a local base at x point के लिए, that there exists a c, right. then it follow a base, a local base at x के लिए, हम यहाँ पहले लिख देते हैं local base at x. so देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग दैट बी एक्स, वो भी लोकल बेस में होगा सच दैट वो पॉइंट सी हमारा सबसेट होगा ए इंटरसेक्शन बी का, राइट। ये हमने प्रूव कर लिया। हमारा फोर्थ पार्ट है, सिंस ए अगर ए बिलोंग टू बी एक्स, देन देयर एग्जिस्ट बी सच दैट एक्स बिलोंग्स टू बी विच इज सबसेट ऑफ ए, देन एवरी वाई बिलोंग्स टू बी के लिए देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग टू बी ऑफ वाई, ओके। सो इफ़ नहीं, सिंस होगा, सिंस चूँकि ए हमारे पास था कि वो बी एक्स में है, हमने माना था इसमें, तो इट मीन्स दैट व्हाट, इट मीन्स वी कैन कन्वे दैट ए इज़ द एन बी डी ऑफ एक्स, राइट। सो हेंस देयर एग्जिस्ट अ टाउ ओपन सेट, राइट, हेंस देयर एग्जिस्ट अ टाउ ओपन सेट, okay, b such that x belongs to b, that is subset of a, right. We can convey this statement from this line. If since a is the base of x at any point x, then a is the nbd of x, right, or hence tau is the open set of b such that it belongs to b, that is subset of a, okay. Up now since b is also a tau open set, right, because it is tau nbd है, nbd of every y that belong to b, right. So again by is the local base, right, for this particular y, local base of y, okay, at y पे, and then we can say b is a tau nbd, okay. Now we can say for this statement, now tau is nbd of every y that belongs to b. So there exists a c point that belong to the by such that c, this point is a subset of what, subset of b, okay. Because for this tau and bd of every y belong to b, then there exists a c point that belongs to the by, that is local base, okay, at y point, such that because c subset of b. So this is how we can prove this theorem that b belongs to the local base. So I hope it is clear now. In any point if you have some doubt, you can definitely comment me. Through that I will try to resolve it. And thank you so much for watching it. And please subscribe to this channel. Also press the bell icon so you will get latest notification of my videos. Thank you so much.